नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिक्र करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिस तरीके से 15 अगस्त को मुलाकात होनी है, उससे ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है और कहा है कि वो मुझसे पंगा नहीं लेंगे। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान सीधे तौर पर रूस के राष्ट्रपति के लिए एक चुनौती है, उनका अपमान करना है। और ये बात मानकर चलिए कि रशिया का अपमान करना यानी रशिया के दोस्त भारत के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने जैसा भी है। ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो लगातार बोलते आ रहे हैं कि भारत और रशिया की इकोनॉमी डेड है। ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो टैरिफ खेल रहे हैं, भारत पर दबाव बना रहे हैं कि आप रशिया से अपने सारे व्यापार को बंद कीजिए, मुख्य तौर पर तेल व्यापार को। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बार बार क्रेडिट लेने की होड़ में नाराज हुए जा रही हैं और इन्हें आपत्ति इस बात से है कि कोई इन्हें रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा। व्हाइट हाउस कई बार इशारा दे चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की नाराजगी है कि वो कई देशों के बीच मध्यस्थता करा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दे रहा। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई में मध्यस्थता करा भी रहे हैं या फिर सिर्फ हवाई चीजें हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी मिली है, आज उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उनके बयान पढ़कर बताती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध नहीं होता, ये तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता था। ये जो बाइडेन का युद्ध है, ये मेरा युद्ध नहीं है। यहां पर बात रशिया यूक्रेन युद्ध की हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं, इसलिए मैं व्लादिमीर पुतिन से बात करने जा रहा हूं और मैं उनसे कहूंगा कि आपको ये युद्ध खत्म करना होगा और वो मुझसे पंगा नहीं लेंगे। लेकिन मुझे लगा कि यह बहुत सम्मानजनक है कि रूस के राष्ट्रपति हमारे देश आ रही हैं, बजाय इसके कि हम उनके देश या किसी तीसरे पक्ष के यहां जाएं। मुझे लगता है कि हमारी बातचीत रचनात्मक होगी। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक होगी। उस बैठक के बाद तुरंत, शायद जब मैं किसी यात्रा पर रहूं, शायद जब मैं कमरे से निकलता रहूं, तो मैं यूरोपीय नेताओं को कॉल करूंगा जिनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं ज़ेलेंस्की से इसलिए नाखुश हूं क्योंकि उन्होंने रूस को किसी भी तरह की क्षेत्रीय रियायत देने से इनकार कर दिया है। मुझे इस बात से थोड़ी परेशानी हुई कि ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि मुझे संवैधानिक मंजूरी लेनी होगी। क्या उन्हें युद्ध करने और सबको मारने की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन जमीन की अदला बदली करने के लिए उन्हें मंजूरी चाहिए क्योंकि यहां जमीन की अदला बदली होने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अब रूस के पक्ष में भी आ रहे हैं, धमका भी रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि अपने आप को सुपर पावर भी दिखाना है, लेकिन फिर चलते फिरते सुना भी देना है। जैसे कई बार हमने देखा है, कहीं पर कुछ लोगों की भी आदत होती है कि मैं प्यार बहुत कर रहा हूं तुमसे, लेकिन मैं तुम्हें सुना भी सकता हूं। सेम वही चीज डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं पुतिन के लिए। कह रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है कि वो हमारे देश आ रहे हैं, बजाय इसके कि हम उनके देश जाते। एरोगेंस नंबर 1, जो पहला एग्जाम्पल दिखाता है कि इनके अंदर कितना एरोगेंस है। दूसरा, कह रहे हैं कि मुझसे वो पंगा नहीं लेंगे, यानी कि वो मेरी बात मान लेंगे, मैं उनसे युद्ध खत्म करने के लिए कहूंगा। एरोगेंस नंबर 2, जहां पर वो दिखा रहे हैं कि मैं सुपर पावर हूं। तीसरी बात, कल तक ज़ेलेंस्की चिल्लाने वाले या यूक्रेन के लिए भारत पर दबाव बनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति अब कह रहे हैं कि मैं ज़ेलेंस्की से भी नाखुश हूं। यानी अब उन्हें रशिया में ये आदमी सिर्फ अपने व्यापार बाजार, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी देश से कभी भी समझौता कर सकता है। कोई भी कभी भी दुश्मन हो सकता है, कोई भी कभी भी दोस्त हो सकता है। बहरहाल पुतिन समझदार लगते हैं। पुतिन जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए। इस मुलाकात के बाद किन किन चीजों पर समझौता होगा, कैसे वॉर रुकने की तरफ आगे बढ़ेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आइए सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कुछ कहा है। पूरा स्टेटमेंट है उनका जो उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। आइए मैं आपको उनके बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं। बाकी इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। I was not a friend of Russia, but I got along well with Putin. It's always good to get along with other countries if possible, but that doesn't mean you roll over like Biden did. Biden came in and he immediately approved the pipeline. I couldn't believe it. Then they say Trump wasn't tough on Russia. I wasn't tough. I was the toughest. Putin said, if you're not tough, I would hate like hell to see you visit. I stopped the biggest economic development job, the biggest job that Russia had ever built. I stopped it. It was dead. And this low IQ president came in and he let them build a pipeline and supply oil and gas all over Europe, you know. So this is really a feel-out meeting a little bit. And President Putin invited me to get involved. He wants to get involved. I believe he wants to get it over with. Now, I've said that a few times, and I've been disappointed.
because I'd have like a great call with him, and then missiles would be lobbed into Kiev or some other place, and you'd have 60 people laying on a road dying. I said, that's cold, that's cold. But it's a violent war. 5,000 to 7,000 people a week are dying. And you know, there's nobody from here. They're all Russian and Ukrainian people, and some people from the cities, much smaller number, but still, those missiles do damage and they kill a lot of people, but mostly soldiers. And they're young soldiers, although in the case of Ukraine, they're getting much older. They're drafting 60-year-olds now. It's a terrible thing to witness, and I think I have an obligation. Look, this is Joe Biden's war. This is not my war. I made a deal with NATO a month ago. You covered it very accurately, actually. We don't pay anything anymore. You know, we're not paying anything. They are buying things from us, and NATO is paying us. I got it raised from 2% of GDP to 5%. And they're paying us for everything that we send. We're not paying. But Biden approved $350 billion. Europe has spent $100 billion. The money that's been spent and the death is incredible. It's the worst thing that's happened, by far the worst that's happened since World War II. So I'm going in to speak to Vladimir Putin, and I'm going to be telling him, you got to end this war, you got to end it. And he wasn't going to mess with me. This war would have never happened. You know, we had a discussion about it one time, and we never had that discussion again. Would have never happened. And when the election was rigged, and then Biden took office, which was barely took office. The auto pen took office. Bad things started happening. Bad things, stupid things were said. And it ended up in a war. And you know, and I don't believe this will happen anymore because I have that pretty well covered. This could end up in a third world war. This could have been a third world war. I don't think that's going to happen now. But I thought it was very respectful that the president of Russia is coming to our country as opposed to us going to his country or even a third party place. But I think we'll have constructive conversations. Then after that meeting, immediately, maybe as I'm flying out, maybe as I'm leaving the room, I'll be calling the European leaders who I get along with very well. And, you know, I have a great relationship, I think, with all of them. And I get along with Zelensky, but, you know, I disagree with what he's done. Very, very severely disagree. This is a war that should have never happened, wouldn't have happened. But I'll be speaking to Zelensky. The next meeting will be with Zelensky and Putin, or Zelensky and Putin and me. I'll be there if they need, but I want to have a meeting set up between the two leaders. I was a little bothered by the fact that Zelensky was saying, well, I have to get constitutional approval. I mean, he's got approval to go into war and kill everybody, but he needs approval to do a land swap because there'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody to the good, for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both. So there's good and there's bad. But it's very complex because you have lines that are very uneven. And there'll be some swapping. There'll be some changes in land. And the word that they will use is, you know, they make changes. We're going to change the lines, the battle lines. Russia's occupied a big portion of Ukraine. They've occupied some very prime territory. We're going to try and get some of that territory back for Ukraine. But they've taken some very prime territory. They've taken largely ocean, you know, in real estate we call it oceanfront property. That's always the most valuable property. If you're in a lake, a river, or an ocean, it's always the best property. Well, Ukraine, a lot of people don't know that Ukraine was largely 1,000 miles of ocean. That's gone. Other than one small area, Odessa, it's a small area. There's just a little bit of water left.